हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट 2 करेंगे। ये है ब्लॉक 3 राजा राव कांतापुरा का और MEG 7 का यूनिट 2 कांतापुरा बैकग्राउंड, है ना। इसमें हम आज हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। द एक्चुअल इसमें एक्चुअली हम क्या करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल इवेंट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट उस टाइम के पॉलिटिकल इवेंट्स थे। फिर उसके जो कांतापुरा के जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जैसे कि मूर्ति, रंगम्मा, रत्ना। फिर हम एक बड़े खान के बारे में भी पढ़ेंगे और लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो आम जनता है ना, उनका क्या ये था, किस तरह से उन्होंने बिहेव किया इन आंदोलनों के टाइम पे। एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे जो कि लंदन में हुई थी। गांधी जी के आइडियाज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो let us start. Historical and political background. The actual historical and political situation of India in the 1930s provide the background of the story that is narrated in Kantapura. The Indian National Congress Committee was already a broad-based political organization that had spread its branches in the length and breadth of India. Mahatma Gandhi, after his return from South Africa, was already recognized as a leader of national stature who had launched his revolutionary campaign based on ahimsa and satyagraha against the British rule. There are recurring references in the novel to important political events of that time, such as Satyagraha, Dandi March of Mahatma Gandhi, the Civil Disobedience Movement, the Round Table Conference, and the Gandhi-Irwin Pact. Whatever was happening on the political scene in India in those years finds its due reflection in the novel. Characters like Murthy, Rangamma, Ratna, Rangagowda are not only aware of what is happening all over India, but they also take an active part in the rebellion against the British rulers. They subscribe to newspaper, मतलब वो खरीदते थे newspapers, which are read in communal gatherings, and thus the villagers of Kantapura come to know about the great freedom struggle that was at its peak then in the length and breadth of the country. Now, the enthusiasm of the people truly reflects the actual mood of the nation to defy the British school of oppression. The villagers go out on a protest march towards the Scaffington Coffee Estate to picket means close करना या अपने आदमी वहाँ खड़े कर देना ताकि कोई चीज़ बिके ना. To picket the country liquor shop near it. The following passage quoted from the Orient paperbacks edition, एक मतलब एक पैसेज की बात की गई है of Kantapura, tells us how the people of the surrounding areas supported the march, है ना, कैसे सपोर्ट करे थे इस मार्च को. इसमें बोला गया है, देखो मैं पैसेज पढ़ती हूँ. एंड वी मार्च ऑन एंड ऑन वाइंडिंग अप द कार्वर रोड टू द केंचम्मा ग्रूव, एंड एट एवरी स्टेप देयर आर कॉर्न पीपल एंड पफ्ड राइस एंड बंगाल ग्राम पीपल. मतलब कॉर्न्स बेच रहे थे, पफ्ड राइस बेच रहे थे, है ना, or Bengal seller and buttermilk people and betel leaf people, and they stop us and say, take this and take this, Mahatma's man. मतलब इतना ज़्यादा लोग एंथुजियास्टिक थे इस चीज़ के लिए कि वो अपनी चीज़ें दे रहे थे उन लोगों को कि आप ले लो. There is an oblique reference to the Round Table Conference in London, where they say the Mahatma will go to the red man's country to get them Swaraj or self-rule. The action of Kantapura dates back to the time when the Gandhian ideas fired the imagination of Indian nation and paved the way for a non-violent revolution against the British rule. Whatever happens at Kantapura was happening everywhere in India. This is equally true of the ruthless handling of the situation by the Red Man's police force. अब बड़े खान की बात हो रही है. बड़े खान इज़ अ टिपिकल पुलिस ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ही स्ट्रिक्टली फॉलोज द ऑर्डर ऑफ हिज मास्टर्स टू सप्रेस द पॉपुलर अपराइजिंग इन द विलेज एंड इट्स सराउंडिंग्स एट एनी कॉस्ट. दिस मैन, हिज मैन, उसके जो आदमी हैं, शावर लाठीज ऑन द गैदरिंग्स ऑफ द विलेजर्स एंड ट्रैम्पल देम under their heavy boots.
they do not let go of any opportunity to molest their women. There is an exaggeration in Raja Rao's description of such happenings as things were the same all over India during the freedom movement. To counter the police brutalities, Murthy advises his followers to take resource to passive resistance in response to a call from Gandhi, but it doesn't achieve the objective of putting the oppressors to shame. मतलब मूर्ति जो है वो बोलता है अपने लोगों को कि आप आप कुछ एक्टिव मत बनो, आप जो है लाठियाँ खा लो, ठीक है. तो बट ऐसा नहीं होता है, वो लोग भी रिटेलिएट करते हैं, वो लोग भी बदला लेते हैं. इट इज़ एन अनइक्वल फाइट एंड द मेन लीडर्स ऑफ द विलेज आर अरेस्टेड एंड जेल्ड. ओके, अच्छा, इसमें बोलने का मतलब है कि उनको, मूर्ति को लगता है ना कि वो अपने लोगों को बोलेगा कि आप जो है पैसिव रेजिस्टेंस करो, आप लाठियाँ खा लो लेकिन कुछ मत करो. उसके बोलने का मतलब है कि जो लोग तुम पे लाठियाँ बरसा रहे हैं ना, उनको खुद ही शर्म आ जाएगी, कि वो ऑपरेसर्स जो हैं वो खुद ही शर्मा जाएंगे. उनको ऐसा लगेगा कि हम ही लाठियाँ बरसा रहे हैं, ये लोग तो लाठियाँ खा रहे हैं, तो उनको शर्म आएगी. लेकिन ऐसा नहीं होता है. ये एक अनइक्वल फाइट हो जाती है जिसमें कि वो लोग लाठियाँ खाते रहते हैं और बाद में मेन लीडर्स को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है. द विलेजर्स वेट इन सस्पेंस फॉर देम टू रिटर्न एंड रिज्यूम देयर लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट द रेड मैन्स रूल. तो इसमें एक KR राव हैं, उन्होंने लिखा है इस सिचुएशन को किस तरह से उन्होंने बताया है. वो लिखते हैं कि मूर्ति's रिलीज renews the dedication and enthusiasm of the community. The villagers launch on the don't touch the government campaign, which is succeeded by the no tax campaign and other forms of civil disobedience. But it proves an unequal fight, and the satyagrahis are mercilessly put down, and all ends in a terrible result. Yet the valiant struggle attains the dimensions of a heroic myth. Kanthapura is destroyed but not defeated. Okay, thank you so much. Next video में we will do Gandhian thought and its impact. इससे पहले हम sources of Kanthapura कर चुके हैं. Thank you.